Hello everyone, welcome back to the online class. In today's lecture, we are going to start a new chapter from Vista's book. This is supplementary book of class 12th. This chapter is 5th, Should Wizard Hit Mommy? This chapter has been narrated by John Updike. In this chapter, John Updike describes about a father who had a daughter. The father's name is Jack, as you can see on the board. Jack, father, and daughter's name was Jo. Jo was a little girl. Still, she had a desire to listen stories. And her father, Mr. Jack, always kept creating new stories to state her. Jo was very curious to put questions regarding the character, regarding the plots and stories. She mostly put questions to her father, extracting the story. Why did it happen? What will happen? Why did it not happen? Why, when did it happen? I mean, so many questions. So, as per the character of daughter Jo, she was curious. She had an ardent desire to listen stories, and she was questionnaire. She was present, my deadly girl. As per the character of her father, Mr. Jack, he was also a creative man. He did not state any story based on realism. All the characters and background of his stories were hypothetic, you can say, only creative to mumble a little girl. All the characters were same as he usually kept telling stories to his daughter. Main character of his story was Roser. Okay, whoever the character were there in his stories, he used one special name that was Roser. Roser fish, Roser squirrel, Roser chipmunk. This time, he describes the story of a Roser skunk in his story to to his daughter. What happens? Let you know the explanation. Next character is wizard, a magician. Wizard was a magician, or you can say a character in Jack's story. And Roser Skunk was also a character of Jack's story. Mommy, okay, the title of this chapter revolves around mommy, okay, means mother. Whose mother? Roser Skunk's mom. Okay, means you have to understand main two characters. Okay, two characters must be known to you. First, Jack and Joe. These are main characters of stories. Okay, of this story. And in this story, Jack describes many stories to his daughter at the bedtime, unless she did not get sleep. Okay, for giving her a nap, Jack usually kept telling stories to her. So there are three characters in Jack's stories. Okay, one, as usual, what he kept using Roser. Main character of Jack's stories was Roser, Roser fish, Roser, skunk, Roser sparrow, Roser chipmunk. Means Roser word was being used all time. And second character, skunk's mom, okay, mommy, and third character is wizard. Okay, what happens? I would like to tell you the story. One day, Jack tells a story to his daughter, Jo, at the bedtime.
He describes that once upon a time there was a Roger skunk. Roger skunk is a kind of animal. It has an offensive smell. It is not pleased to have smell of Roger skunk. So he was not happy with the smell of his own, and he was ignored by all the friends of his own age. They did not want Roger skunk to participate their game. So he was feeling all alone, dejected, isolated, and sorry. Nobody was there to accept Roger Skunk as the game mate. So once he went to his mom. Who went? Roger Skunk. Jack tells stories to Joe, his daughter. And these are the characters of Jack's stories. Okay, Roger Skunk, Mommy, Roger Skunk's mom, and a magician who is known as Wizard in this chapter. Jack tells Joe that once upon a time there was a Roger skunk and he had offensive, offensive smell, so that he was ignored and avoided by all the game mates in his area. Nobody accepted him as game mate or friend. They did not want him to stay around them because of his offensive smell. One day, uh, Roger Skunk went to his mom and told that I am ignored, I am dejected, nobody likes me, nobody likes to play with me because of my smell. But Skunk's mom was well known to the reality that whatever the smell of yours is, how do you look like, whatever it is as per the caste and you can say unity of ours. If we are belonging to that category of animals, so we should be looked like them. If we are a human being, so we must have two eyes, two ears, we must have teeth, we must have hand and legs. If another animal does not like us, if we want to be somebody else or something else, so it is our misunderstanding, because we should ever you should always accept whatever has been given or gifted by the God, however you look like. Okay, so Skunk's mom was trying to convince her son Roger Skunk that you are good, okay, and however you are always fine, and we should not be looked like other animals, and we should not be having such a smell which is different rather than this. But uh, one day, Roger Skunk went to Wizard and he requested him to change his smell, because he stated the problem that nobody likes him, nobody wants to play, because he was a child and a child wants to play with many children. And if children ignore a single child, an individual child, they don't feel better. Okay, but finally, what happened? In this story, it's a kick and mystery. If you will be known to the conclusion of this story, maybe it will not be beneficial and entertaining, knowing all the summary and going all the paragraphs. So it is better to start first paragraph of this chapter, and gradually we'll know what happens next. Okay, now the first thing before you read, here is a story about a worldview of a little child and a difficult moral question she raises during this story session with her father. In this chapter, we are going to study about a daughter, a little girl whose name is Joe, and a worldview of child. How does a child think? What kind of contemplations come to the mind of a child? And what is the view about the world? How does Now, this story revolves around the world view of a child. How does she think, or what is the contemplation? What is the you can say thinking level of a child? How does she think? What does she think? And the difficult moral question. Okay, means logically she puts many questions to her father. Okay, and rises during this story session with her father. What happens next? Let you know going to the very first paragraph of this chapter. In the evenings,
And for Saturday naps, like 2 days, Jack told his daughter uh, Joe a story out of his head. Okay, in the evenings, especially on Saturday naps, weekend you can say, Jack used to tell a story on weekend, every weekends, to his daughter Joe. Joe is the name of his daughter, and father's name is Jack. Jack is the main character. Joe is second character of this chapter. Jack was creative person and he used to create stories out of his head, whatever comes to his mind. जो भी उसके दिमाग में आता था, जैसे भी आता था। हाँ, एक बात थी कि वो अपने हर स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर था उसमें रॉजर शब्द लगाता था। रॉजर शब्द किसी भी एनिमल के आगे, रॉजर स्क्वायरल हो गया, रॉजर फिश हो गया, रॉजर चिपमंक हो गया, रॉजर स्कंक हो गया। तो ये जो स्टोरी है, जो स्टोरी वो बता रहा है दिस टाइम टू हिज डॉटर इज अबाउट रॉजर स्कंक। इस टाइम उसने स्कंक के पहले रॉजर लगाया हुआ है, ठीक है। अब वो अपने दिमाग में स्टोरीज क्रिएट करता है, क्रिएट करके अपनी बेटी को सुनाता है। ये कब होता है? हर सैटरडे को शाम, ठीक है, हर सैटरडे शाम को, वीकेंड को वो अपनी बेटी को स्टोरी सुनाता है, ठीक है, बेड टाइम पर। दिस कस्टम, ये जो तरीका था, ये जो ट्रेडिशन था, बिगेन व्हेन शी वाज 2, जब वो 2 साल की थी तभी ये तरीका शुरू हो गया था। आई मीन Jack, the father of Joe, used to state or began to state stories since she was 2 years old. जब वो लड़की 2 साल की थी तभी से उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसके पापा हर एक वीकेंड पे उसको स्टोरी सुनाते हैं। Was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. अब 2 साल की बच्ची थी तब से ये कहानी सुनाने का सिलसिला चल रहा था। अब कहानी सुनाते सुनाते his mind was vacant, means how much will he create, वो कितना क्रिएट करेगा, क्योंकि क्रिएट करने का जो उसका तरीका था वो सिर्फ एक ही था कि मतलब भाई रोज रोज कहानी सुनाना है बच्ची को, या फिर हर वीकेंड पे करना है। 2 साल की जब से तभी से ये कहानी सुनाने का काम चल रहा है, तो 2-4 साल में आदमी का दिमाग पूरी तरह से वैकेंट। एंड सिंस द कस्टम वाज गोइंग ऑन, इट हैज बीन 2 years, 2 साल से कहानी का मतलब द चाइल्ड इज 4 years old now। अब वो लड़की 2 साल की, सॉरी 4 साल की, 2 साल की थी तब से कहानी सुनाना शुरू हुआ, अब वो 4 साल की हो गई है, 2 साल हो गए उसको कहानी सुनाते सुनाते। अब जैक का जो माइंड है वो बिल्कुल इम्प्टी, वैकेंट हो गया है। वैकेंट का मतलब ही हैड नो मोर एंड मोर आइडियाज टू क्रिएट ऑलवेज चार्मिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। दैट इज व्हाई he used only a single character in his all stories, Roger. Okay, and his daughter was very curious. He had an ardent desire to put many questions. Meanwhile the session was going on. जब कहानी चल रही थी उसी टाइम वो लड़की बार बार क्वेश्चन करना पसंद करती थी। She was a questionnaire girl, बहुत ही क्रिएटिव थी, वो भी बहुत सोचती थी। अब आगे क्या होता है? Each new story was a slight variation for a basic tale. Each story had a slight variation, बहुत थोड़ा सा, slight का मतलब बहुत ही कम, variation का मतलब differences, means most of the stories are, all the stories were based on a single theme, and only he changed the character using a different word after Roger. Roger शब्द के बाद सिर्फ एक शब्द लगा देता था, कैरेक्टर बदल गया और थोड़ी सी स्टोरी में चेंजेस ला देता था, बाकी वैसे ही सब कुछ पैटर्न वैसे ही था। तो वो बच्ची कहीं ना कहीं अब बोरिंग फील कर रही है ना, और बोरिंग फील करते करते वो क्वेश्चन भी बहुत सारा करती है पापा से। अब पापा एकदम परेशान कि कितना जवाब दो इस बच्ची को, कितना स्टोरी इसको सुनाऊं। और मेन वाइल बीच बीच में वो लॉजिकल तार्किक क्वेश्चंस, प्रश्न भी पूछती है पापा से कि पापा ये कैसे हुआ, पापा वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें। अब पापा काफी परेशान है। आगे A small creature usually named Roger. अब वो छोटे छोटे क्रिएचर्स को कैरेक्टर बनाते थे अपनी स्टोरी में। अब वो क्या क्रिएचर्स होते थे? रॉजर फिश, रॉजर स्क्वायरल, रॉजर चिपमंक had some problem and went with to the wise old owl. अब इसमें एक और कैरेक्टर बताया जा रहा है उल्लू के बारे में, ठीक है।
that owl was a wise, you can say clever. He could give possible solutions to visit a wizard. Means owl था. अब जितने भी क्रिएचर्स को समस्या होती थी जैक की स्टोरी में, वो सभी क्रिएचर जाते थे कहाँ? टू आउल, टू एन आउल. द आउल वाज वाइज, और वो जो उल्लू था वो बुद्धिमान था. अब यहाँ पे पहली बार हो रहा है कि उल्लू को बुद्धिमान बताया जा रहा है. हालांकि ऑफन वी हियर दैट आर यू एन आउल, क्या तुम एक उल्लू हो. ये कब कहा जाता है? व्हेन द पर्सन सीम्स टू बी लेस वाइज. ठीक है, मीन्स थोड़ा सा पागल जैसा, क्रेजी जैसा, कम बुद्धिमान हो, उसको हम उल्लू कहते हैं. यहाँ पे उल्लू को वाइज बताया जा रहा है क्योंकि ये कहानी बताई जा रही है जो कि एक छोटी सी बच्ची को सुनाई जा रही है. अब had some problem and they went to the wise owl. The owl told him or them to go to a wizard. अब ये जो कहानी है जैक एंड जो की, इसमें जो कहानी सुनाई जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो कहानी जैक सुनाया करते थे जो को, अब उसमें क्या होता था कि वो छोटे छोटे क्रिएचर्स जैसे रॉजर स्कंक, रॉजर स्क्वारल, कोई भी क्रिएचर, कोई भी जानवर का नाम बताते थे. उसके बाद उन एनिमल्स को जब समस्याएं होती थी तो वो कहाँ जाते थे? एक वाइज उल्लू के पास जाते थे, और उल्लू उनको उनकी समस्याओं का सलूशन पाने के लिए बताता था कि तुम लोगों को एक विजार्ड के पास जाना है. विजार्ड क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है that wizard is a magician and he could provide all kinds of solutions to the problems of creatures. A main character of Jack's stories. जैक की स्टोरीज के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से संबंधित सभी तरह के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है कौन? विजार्ड, जो कि एक मैजिशियन है. He had a stick, उसके पास एक स्टिक है, उस स्टिक से वो किसी भी तरह की समस्या को सॉल्व कर सकता है, ऐसा जादू उसके पास है. आगे, and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number of Roger creatures had. और उसके बाद जो काम था विजार्ड का, वो क्या करता था? विजार्ड usually provided solutions for the problems of creatures, and in order to payment or charge them, he required some pennies. That number of pennies were more than the number they had with them. Means जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी पेमेंट चार्ज करता था विजार्ड, वो विजार्ड जो पेनीज चार्ज करता था वो नंबर, वो पैसे अधिक हुआ करते थे. किससे? जितना पैसा उन क्रिएचर्स के पास हुआ करता था. मीन्स अगर क्रिएचर्स के पास 4 पेनीज है या 10 पेनीज है तो वो 15 मांगता था, 20 मांगता था, है ना. ये उसके चार्ज करने का तरीका था. अब आगे, बट लेकिन in the same way directing the animals to a place where the extra pennies could be found. On the contrary, wizard used to direct them. उनको ये भी बताता था कि तुम लोग एक्स्ट्रा पेनीज कहाँ से लाओगे. एक्स्ट्रा पेनीज का मतलब वो जो पैसे एक्स्ट्रा मांगता था, जैसे मान लो 10 पेनी मांगा और एनिमल्स के पास सिर्फ 4 है, तो वो जो 6 पेनीज लाना था उसको कहाँ से लाना था? विजार्ड also directed the place where they could find the same amount. वो जगह भी बताता था कि ये पैसा जो मैं मांग रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये तुम पाओगे कहाँ से? उस जगह पे चले जाओ. हाउ मैजिकल दिस इज. कितना जादुई है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से दवा लें, वो हमारे रोग का इलाज भी करे, और जब पैसे कम पड़े हमसे तो फिर वो जगह भी बताया कि इस जगह पे चले जाओ, रेस्ट ऑफ द मनी यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर एंड जस्ट पे इट टू मी, और फिर उसके बाद वो पैसे लाकर मुझे दे दो. तो ऐसा इस स्टोरी में बताया जा रहा है. अब now the Roger was so happy he played many games with other creatures. Penny small. The Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है स्टोरी का, जैक की स्टोरी का, वो कौन है? रॉजर है. अब रॉजर के साथ क्या होता है? रॉजर वाज सो हैप्पी, वो बहुत ही खुश रहता था गेम खेलते समय. ठीक है, ही प्लेड मेनी गेम्स, बहुत सारी गेम्स खेलता था विद अदर क्रिएचर्स, एंड वेंट होम टू हिज मदर, और फिर वापस घर लौट के जाता था कहाँ? अपने माँ के पास. जस्ट इन टाइम टू हियर, जब वो सुनता था, क्या सुनता था? द ट्रेन व्हिसल, आवाज किसकी? ट्रेन की. जब वो ट्रेन की आवाज सुनता था तो अपनी माँ के पास जाता था. And that brought his daddy home from Boston. रॉजर के पिताजी
बोस्टन में काम करते थे और बोस्टन में काम करने के बाद फिर वो ट्रेन से घर आते थे और जब वो ट्रेन स्टेशन पे आती थी तो विशल करती थी, आवाज ब्लो करती थी। When Roger could hear the whistle sound of train, he came back to his mom. फिर वो वापस अपने घर चला आता है। ठीक है, जैसा लग रहा है कि एक कोई आदमी है, उसका कोई बेटा है, उसकी कोई फैमिली है, आदमी कहीं बाहर काम करता है, जैसे टाइम होता है उसके आने का तो बेटा कहीं भी खेल रहा होता है तो फिर वो घर अपने माँ के पास चला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है, चीजों को आप बिल्कुल इमेजिन करते हुए चलेंगे यूजिंग इमेजरी कि हाँ कैसे स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, कैसे स्टोरी में टर्न आ रहा है, क्या होता है। अब जैक डिस्क्राइब देयर सफर, जैक उनके सफर को डिस्क्राइब करते हैं, व्हाट डू दे ईट, वो खाते क्या हैं, एंड द स्टोरी वाज ओवर, और स्टोरी पूरी तरह से खत्म हो गई कि वो रॉजर खेलता रहता था अपने दोस्तों के साथ, फिर जैसे ही ट्रेन आती थी उसके पापा आते थे तो अपनी माँ के पास चला जाता था, फिर वो सफर के बारे में बताते हैं कि वो लोग अपना शाम का भोजन करते हैं, उसके बाद स्टोरी खत्म हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing his made the right seem futile. अब ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए थे। It had been a normal custom and fatiguing custom of Jack that Joe did not feel better and she did not go for naps. वो नींद नहीं ले पाती थी, नींद ही नहीं आती थी उसको, सोती ही नहीं थी, छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची है, उसकी आदत हो गई थी कहानी सुनने की। जब तक वीकेंड पे उसके पापा कहानी नहीं सुनाते थे तब तक वो बच्ची सोती नहीं थी। अब समस्या ये थी कि एक ही आदमी कितना कहानी सुनाए उसको, 2 साल से कस्टम चल रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया। अब फाइनली क्या होता है कि ये जो तरीका था काफी फैटिगिंग का मतलब काफी बोरिंग हो गया था। ठीक है, काफी फैमिलियर हो गया था, काफी ओल्ड फैशन हो गया था। ये जो राइट था, राइट का मतलब यहाँ पे तरीका होता है। अब वो जो रिचुअल था, जो भी तौर तरीका था, सब कुछ उस बच्ची के लिए उबाऊ सा हो गया था, वो अच्छा फील नहीं करती थी। अब जैक को लगता है दैट ऑल द राइट, जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं, जो तरीका है उसको नींद दिलाने का, इट सीम्स फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब मीनिंगलेस होता है। ठीक है, मींस नॉट वर्किंग। ठीक है, जो काम नहीं कर रहा हो, प्रभावी ना हो, इस वजह से अब जैक काफी बोरिंग फील करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। Rest of the paragraphs will be explained in the next video. So stay home and stay safe. Goodbye to everyone.